क्या उनमें से एक हैं जो ये सोचते हैं अरे ये घर तो किराए का है, इस पर क्या खर्चा करना, जब खुद का घर होगा तो दिल खोल कर खर्चा करेंगे और सारी चीज़ें जो हमने अब तक खरीदी हुई हैं अलग अलग जगह से उसको बॉक्स में बांध के रखते हैं। सो इफ़ यू आर विजिटिंग this channel for the first time, let me tell you, I am Shivangi, your residential design expert, and this is my show House to Home with Shivangi. I am here with the 12th episode of my show, and I'm gonna cover 6 easy ways to spruce up your rental house. People have their own reasons to stay in a rental house, but you know what I feel, जब खुद के घर में जाना है तो ठीक है, it can be 2 years, it can be 5 years, or it can be 10 years, but till that time why not have a beautiful world around with small investment or smart investment, which wherein you can invest in stuff which you can carry forward in your next house. So today I'm gonna share a few tips to make your rental house beautiful, just like your own house. So first point is go for good quality paint. Generally owners एक ऑफ वाइट कलर या क्रीम कलर लगा के दे देते हैं घर में जब भी कोई नया शिफ्ट होने वाला होता है. तो when you are actually entering in a house on a rental basis, do little investment in the color. Anyways the owner is gonna put some color. Go for a better quality and the color of your choice. Trust me, this investment is it will definitely upgrade your lifestyle because you have to stay for few years there. So it is not for the landlord. Have the mindset that this is for your own self because you will be using the house. And trust me, it feels so good when you enter a house which has a good quality paint of your own choice. Second point is spend on loose furniture. Obviously, spending on a fixed furniture in a rental house is useless. But that doesn't mean you will not spend on a furniture और बहुत basic furniture रख के आप घर में रह रहे हो. You can invest in good quality furniture, so which are loose furniture basically, nothing fixed. You can easily take it away whenever you leave the house. Even if you are buying it in every 6 months or every year, ensure that they match each other. They should be complementing each other. And अगर आपका ऐसा कोई प्लान नहीं है तो you can also look out for the websites which give you rental furniture at a very minimal cost. You can have a very beautiful, well furnished house. Third point is spend on light fittings. जब rental house में shift होते हैं तो एक dull सा feeling आता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर insufficient light होता है. सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, इन्वेस्ट इन हाई इंटेंसिटी बल्ब्स एंड गो फॉर डे लाइट rather than white light, so it will give you a warmth in the space. Preferably go for LED because they are energy efficient lights. You can use lot of light fixtures like pendant lights, like table lamps, like floor lamps. ये सारी चीज़ें आप लेके जा सकते हैं जब आप घर खाली करेंगे, बट टिल द टाइम यू आर स्टेइंग इन द हाउस यू विल हैव एन अमेजिंग एम्बियंस विद यू. फोर्थ पॉइंट इज यूजिंग रग्स. रग्स एक्चुअली अपलिफ्ट योर हाउस. आप उसको सोफे वाले एरिया में लगा सकते हैं. यू कैन हैव इट इन योर बेडरूम, अराउंड द बेड, यू कैन हैव इन द चिल्ड्रंस रूम, you can have small rugs in between the passage and all. So ये सारी rugs suddenly एक interest create करते हैं रूम में, and even they can hide away some stains or some spots on the floor which cannot be removed. Fifth point is accessories. Nothing can work wonders as accessories can. Please do not wait for shifting in your house for unpacking that box, the Pandora box of different stuff which you have collected from here and there and all kind of travels you have done around the world. Use them now. Live in the moment. Life is now. निकालिए वो सारे stuff को, कुछ और चीज़ें ऐड कीजिए, जैसे कैंडल्स हैं, जैसे पिलोज हैं, जैसे रनर्स हैं, फोटो फ्रेम्स हैं, कुछ ट्रेज ऐड कीजिए, कुछ बॉक्सेस ऐड कीजिए जो दिखने में बहुत अच्छे दिखते हैं. यू कैन स्टोर सर्टन थिंग्स इन दैट. These are all accessories which enhances your interior. और सबसे अच्छी बात यह है कि you can take it
wherever you are going to go after this house. So nothing goes waste, nothing stays in the house. And sixth and the last point is go green. ये go green ना मेरे सारे वीडियोस में आता है because plants are magical. They create an amazing ambience, an amazing atmosphere. एक लाइवली टच देता है घर को. तो अगर कोई भी एरिया को हमें लाइवली करना है, अगर कोई भी एरिया को एनहांस करना है, तो एक प्लांट ऐड कर दीजिए. देयर आर फ्यू प्लांट्स विच आर मेंटेनेंस फ्री. उनको ज़्यादा धूप नहीं लगती है, तो दे कैन बी प्लेस्ड इन एनी कॉर्नर ऑफ योर रूम, लाइक पाम, लाइक ड्रेसिना, लाइक मनी प्लांट. तो मतलब आप कहीं भी लगा सकते हैं. आप एक स्टेम निकाल कर पानी में लगा सकते हैं किसी जार में, आप एक प्लांटर में, एक पॉट में लगा सकते हैं, आप उसको हैंग कर सकते हैं. एंड दे आर रियली रफ एंड टफ. दे रियली डोंट नीड लॉट ऑफ केयर और अटेंशन फॉर ग्रोइंग. And if you are lucky enough to have a balcony, go for some artificial grass which will give a instant uplift to your balcony, and it will also act as an extended part of your room. So these are the 6 tricks wherein you can make your rental house a home with very minimal investment, and you can say smart investment. So I'll repeat the 6 points. First point is go for good quality paint. Second point is spend on loose furniture. Third point is spend on light fixtures. Fourth point is use rugs. Fifth point is accessorize the house. And sixth point is go green. So these are quick and easy ways to spruce up your rental home. Try them out and let me know if they made any difference in your life. Stay tuned for more such videos. Till then, do like and subscribe to my channel and share this video to make the world beautiful around you. Bye bye.